यहाँ से हम लोगों ने की है सबको आ रहा होगा ओके पहले तो थोड़ा पिक्चर देखना
You pay me some amount. Okay, so you are paid that amount. बाय डिफॉल्ट आपको ये राइट सिर्फ 5 साल के लिए मिलते हैं, यानी आपका सीरियल 5 साल तक चला, आप वो सॉन्ग यूज कर सकते हो क्योंकि आपने जो पेमेंट किया वो 5 साल के लिए। बट सपोज वो 5 साल के आगे भी वो सीरियल चल रहा है, आपको वो मितवा वाला सॉन्ग भी यूज करना है, तो वापस आपको करण जौहर को कांटेक्ट करना है, टेक हिज परमिशन, एंड देन फाइनली यू शुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि मेरे को अभी वापस ये बाय डिफॉल्ट और 5 साल के लिए राइट्स मिले हैं। ओके, यू हैव रिसीव्ड इट, right? So this process is known as assignment of copyright. You can only use that song जो आपने पर्पस बताया ना, आप वही पर्पस के लिए वो राइट्स यूज सॉन्ग यूज कर सकते हो। आपने बोला मैं मितवा वाला ही सॉन्ग ये सीरियल में यूज करूंगी, सिर्फ वो सीरियल, बाकी का सीरियल में आपको राइट्स नहीं है यूज करने, बोला मैं मितवा वाला ही सॉन्ग ये सीरियल। Okay, so it was like copyrights are the rights given by law for a certain term of year. So understand this, it is almost 60 years from the beginning of the next calendar year, whether you know who is the author, music composer or not, or even after the death. Okay, so how it goes for 60 years, I'll say you. Suppose Mr. X writes a poem और उनको copyright ये साल में मिला, रजिस्ट्रेशन किया, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस इज ही डाइज इन द मंथ ऑफ डिसम्बर 2022, तो उसके बराबर जो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर आएगा दैट वुड बी जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स, 60 years rights are given to the family member of this person. Okay, so no one can steal the work. अगर आपको से फॉर एग्जाम्पल हरिवंश राय बच्चन जी की एक पोयम कहीं पे पढ़नी है, मधुशाला पोयम पढ़नी है, इसके राइट्स हरिवंश राय बच्चन अब नहीं रहे, 60 इयर्स उनकी डेथ के बाद नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से काउंट किया तो वो राइट्स है अमिताभ बच्चन जी के पास। आप उनसे परमिशन लीजिए कि एक छोटा सा हमारा कवि सम्मेलन है और हम आपके डैडी की बुक से, पोइट्री की बुक से एक दो कविताएं हम पढ़ना चाहते हैं, टेक द परमिशन इन राइटिंग, इट नेवर गोज इन वर्बल। ओके, सपोज आप कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज करते हो जहां पे आप टिकट्स बेचते हो, तो आपको वो क्लियरली बताना है कि कवि सम्मेलन जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं वहां पे हम टिकट्स बेचेंगे, पैसा आएगा, तो उसमें से आपको थोड़ा कुछ पैसा अमिताभ बच्चन को भी देना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ अवेयरनेस इज वेरी मच नेसेसरी। यू कैनॉट से हरिवंश राय बच्चन अब नहीं रहे, थोड़ी ना किसी को मालूम पड़ेगा हम उनकी पोयम रीड करेंगे, तो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन? See the last line, https
//copyright.gov.in, ये साइट को आप क्लिक करो तो आपको कॉपीराइट की साइट पे लेके जाएंगे। आजकल सब काम ऑनलाइन होता है। यू हैव टू गिव ऑल द डिटेल्स इन फॉर्म 4 एंड दे चार्ज यू अ वेरी नेग्लिजिबल, छोटा अमाउंट फीस चार्ज करते हैं। और आपको 30 डेज वेट करना है। 30 डेज में वो लोग पूरा चेक करेंगे कि आपने जो कविता लिखी है, स्टोरी लिखी है या डायलॉग लिखा है, वो कहीं से आपने कॉपी नहीं किया है। ठीक है। और अगर कॉपी नहीं किया है तो जैसे 30 डेज कंप्लीट होंगे तो आपको कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। बट सपोज इफ दे हैव अ डाउट दैट दिस हैज बीन कॉपीड, देन दे विल आस्क यू क्वेश्चन एंड यू हैव टू प्रूव कि आपने कॉपी नहीं किया है। और अगर आप प्रूव कर सकते हो कि आपने कॉपी नहीं किया है, देन यू गेट कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नो वन कैन स्टील योर वर्क, आपका काम कोई चोरी नहीं कर सकता है। तो कॉपीराइट करवाना बहुत जरूरी है। आई विल गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मेरे यहाँ पे एक लड़का, बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ाई में रेगुलरिटी बहुत अच्छी थी। एक दिन मुझे आके बोला, मैम मैं प्रोडक्ट्स का प्रमोशनल मैसेज लिखता हूँ। मैंने बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर वो लिखता है तो उसको कॉपीराइट के बारे में अवेयरनेस होगा। 2-3 महीने के बाद ये बच्चा आके मुझे बोलता है, मैम मुझे एक एडवर्टाइजिंग कंपनी ने बुलाया है और बोला है आप जो प्रमोशनल मैसेज लिखते हो वो पूरा बुक लेके आओ। आई सेड वेरी गुड। जैसे वो बाहर गया मैंने उसको वापस बोला, मैंने काम किया, तुमने अपना राइटअप जो भी डायलॉग्स प्रमोशनल मैसेज लिखा है, क्या तुमने उसका कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन किया है? दिस बॉय वॉज ब्लैंक। बोलता है वो क्या होता है? आई सेड आज बेटा तू एडवर्टाइजिंग कंपनी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि तू जाएगा, तू पढ़ेगा, वो लोग रिकॉर्डिंग करेंगे और वही ये 50 कंपनीज को अलग अलग तुम्हारा प्रमोशनल मैसेज बेच कर कमाएंगे। यू डोंट हैव एनी राइट टू प्रूव कि ये तुमने लिखा है, क्योंकि तुम्हारे पास इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो लड़का इतना अलर्ट हो गया, बोलता है मैम क्या करूं? मेला विजिट दिस साइट, पहले सबसे पहले अपने सब प्रमोशनल मैसेज को रजिस्टर्ड करवाओ, बाद में से एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास जाओ और उनको बकायदा बताओ कि मेरा ये सब जो भी मैसेज मैं आज पढ़ रहा हूँ ना, उसका सबका कॉपीराइट मेरे पास है। यू हैव टू पे मी द प्राइस, यू कैन नॉट स्टील माई वर्क। ओके। सो व्हाट इज इनफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स? इनफ्रिंजमेंट यानी वायलेशन, गलत काम करना। ठीक है। तो जैसे दूसरे का काम बिना परमिशन आप जेरोक्स करके बेचते हो, या उसको आप अपनी भाषा में कन्वर्ट करते हो, या उसके ऊपर आप एक ड्रामा या पिक्चर बनाते हो। ठीक है। या तो आप ऐसा कुछ काम पब्लिक में स्ट्रीट प्ले वगैरह में करते हो, या उसके ऊपर एक पिक्चर किसी को बनाने को बोला, या रिकॉर्डिंग साउंड रिकॉर्डिंग बोला, या आप किसी का सॉफ्टवेयर वगैरह कॉपी करते हो, बेचते हो। सो दिस ऑल आर अमाउंटिंग टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स। Okay, now our case studies, all interesting case studies are there. Mr. Ram Sampath, I think instead of showing this slide, one second. I will try to, yes, show this slide. Okay. You can see on one side there is one person, unknown person है, और दूसरी बाजू आपको ऋतिक रोशन दिख रहे हैं. Fine. Now, the person on the left side is Ram Sampath. He is a music composer. ठीक है? One second. Fine. He is a music composer. इन्होंने एक मोबाइल को लॉन्च करने के लिए म्यूजिक कंपोज किया था. In those days, we were not having iPhone. We used to have Sony Ericsson मोबाइल. और बहुत बढ़िया मोबाइल था, बहुत एक्सपेंसिव था. तो कंपनी ने बोला इंडिया में प्रमोट, पब्लिक को अट्रैक्ट करना है ये प्रोडक्ट के लिए. तो उन्होंने एक म्यूजिक कंपोज किया एंड दैट इज नोन एज थंब म्यूजिक. और खाली म्यूजिक से नहीं चलेगा, तो उनको क्या लगा कि म्यूजिक के साथ हम कुछ ऐसा भी दिखाए कि जहाँ पे इनको रियलाइज हो, मीन्स समवन इज परफॉर्मिंग सम डांस स्टेप. सो ऋतिक रोशन को बोला तुम हमारा प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ. तो ऋतिक रोशन ने कुछ स्टेप्स उसमें परफॉर्म किया. एडवर्टाइजमेंट बहुत पॉपुलर हो गया, वो थंब म्यूजिक लोगों को याद रह गया. एट द सेम टाइम Hrithik Roshan's father, Rakesh Roshan, was making a movie. He was producing one movie and the name of that movie was Crazy 4.
तो पिक्चर में कहीं पे कुछ सेकेंड्स का वो म्यूजिक, सोनी एरिक्सन मोबाइल का म्यूजिक लिया गया और यहीं वही म्यूजिक पे राकेश रोशन इज परफॉर्म सॉरी ऋतिक रोशन इज परफॉर्मिंग द सेम स्टेप्स। जब ये म्यूजिक कंपोजर राम संपत को पता चला तो उन्होंने सीधा राकेश रोशन के ऊपर केस किया था। एंड यू नो ऋतिक रोशन सेड मैंने एसएमएस करके परमिशन लिया राम संपत का। ऋतिक रोशन के अंकल राजेश रोशन इज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड ही सेड दैट ओ मैंने ये म्यूजिक कंपोज किया है, राम संपत ने नहीं किया है। एनीवेज फाइनली द मैटर केम इन फेवर ऑफ राम संपत एंड ही हैड एक्चुअली डिमांडेड अ क्लेम ऑफ 2 करोड़। लेकिन जब 2 करोड़ का क्लेम मांगा तो कुछ टैक्स वगैरह काट के 1 करोड़ 77 lakhs एंड समथिंग सम अमाउंट दिस पर्सन रिसीव्स। ही वाज नॉट हैप्पी बट एक्चुअली उसने वो टाइम पे एक सबक सिखा दिया था कि भाई किसी का भी काम अगर आप चोरी करते हो ओके विदाउट टेकिंग परमिशन इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो गोइंग टू वन स्लाइड सी वन स्टेप अहेड, मैंने आपको बोला ना मैंने ये सब ऑनलाइन रिसोर्स से निकाला है डेटा, सो न्यूज़पेपर से निकाला है। सी कि इंडस्ट्री में अपना जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है जिसको भी देखो हर किसी का काम चोरी करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। तो फाइनली जजमेंट वाज इन फेवर ऑफ राम संपत एंड ही एक्चुअली डिमांडेड 2 crores बट ही गॉट 1 crore 77,34,600। ये टैक्स वगैरह गवर्नमेंट ने काट के उसको दिया। ही वॉज वेरी नॉट हैप्पी। ही एग्जैक्टली वांटेड 2 crore rupees एज कॉम्पेंसेशन। तो एक कुछ 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स का ये लोग ने जो म्यूजिक कॉपी किया और अपना पिक्चर में डाला वो पिक्चर हिट गया भी नहीं, पूरा फ्लॉप गया और प्लस 2 करोड़ का कॉम्पेंसेशन इनको राम संपत को देना पड़ा। ओके, नाउ गोइंग टू द मूवी बादशाह, this was released in the year 2017. Fine. One song was in controversy of this movie which was copied from an old movie Diwar. Star cast was Amitabh Bachchan, Neetu Singh, Shashi Kapoor. पिक्चर के डायलॉग्स बहुत हिट थे और एक डायलॉग वो था मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। एंड द यंगर ब्रदर शशि कपूर सेज मेरे पास माँ है। ये वो पिक्चर का सॉन्ग था। अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग विच वाज स्टार कास्ट बाय शशि कपूर एंड नीतू सिंह। द वर्डिंग्स वे वेरी गुड एंड व्हाट वी थिंक कि बहुत पुरानी पिक्चर का सॉन्ग है, किसको याद रहेगा, हम लोग थोड़ा उलट पलट करके सॉन्ग बना देंगे। ओके, सो द एक्चुअल सॉन्ग वाज विच इज सung बाय शशि कपूर इन द मूवी। कह दो तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, तो सोचो तो जानो। ठीक है, अभी ये जो मूवी बना बादशाह, इट वाज इन 2017। ये लोग ने पिछला वाला पार्ट सॉन्ग का आगे ले लिया, सोचा है कहीं, हाँ समथिंग लाइक दैट द सॉन्ग वाज मेड, और फिर ओरिजिनल लाइन आ जाता है। तो उनको क्या लगा कि ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं रहेगा। एक्चुअली जब ये मैटर कोर्ट में गया तो इट वाज शोन दैट इट इज अ वेरी वेरी क्लियर केस ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अच्छा खासा अमाउंट पेनल्टी इम्पोज हुआ, प्लस जज ने ये कहा कि ये पिक्चर थिएटर्स में चलेगा लेकिन आपको ये सॉन्ग अपना थिएटर पे नहीं दिखाना है। ओके, आई कैन डू वन थिंग इज what song I sang and what was that 1 second, we will enjoy that song also. Just give me a second, so let me find out from videos. Just give me a minute so that I can stop sharing PPT and take you to the song, which you will be surprised कि इतना कॉपी हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, just give me a seconds. हैं
बिना रैप वाला रीमिक्स। हाँ, चलेगा हाँ, क्या है? अच्छा लग रहा है। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सोनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सोनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जान। So I think students, you will be able to understand by sharing these examples that we think many times कि picture पुराना था, किसको पता चलता है, okay? And just imagine that this song was asked to be removed from the movie, okay? And this is a huge loss. Picture could not run because many of us we visit cinema halls to watch not only movie story but also interested in learning the, interested in hearing the music. So right from advertising to the dialogues to the songs, from early beginnings, so many popular songs, story have been copied. And in those days, we were not aware about that what we are doing is wrong. Today, people are becoming more aware. The moment they come to know it is resembling to something, सीधा कोर्ट में केस होता है कि ये पिक्चर को इन्फ्रिंजमेंट का ये है, इसमें पिक्चर रिलीज नहीं होगा. They have to pay us the compensation. Fine. I just want to take you to another PPT also with two more examples. Just give me 1 second. So that we are taking and understanding that many times. Okay, fine, got it. So there was a movie named Rangoon. This was released in somewhat again around 2016. The picture had a story which was totally copied from a very old movie of 1930s, wherein very clearly it was specified that it is copied from 1 second. Okay, copied from a movie named Hunter Valley. Almost dialogues were same, हीरोइन का कॉस्ट्यूम बोलो, अपना हेयर स्टाइल बोलो, सब सेम था. और किसी को लगा 2016 और एक पिक्चर 1930 में रिलीज हुआ है, किसको इतना याद रहेगा, इतना लाइफ तो किसी का नहीं रहता और किसी को याद रहेगा. बट someone filed a matter of infringement, and finally Vishal Bharadwaj had to pay a compensation of 2 crore rupees for copying some substantial matter in their movie Gajani with Fajini, and this is a case study of 2005. Actually, Fajini was a very popular movie in South India. Story same Hindi में बना. The name of this movie was Gajani with only a slight difference. साउथ इंडियन मूवी में हीरो की वाइफ का डेथ होता है, whereas here it is shown as the death of hero's girlfriend. Okay, so yes, this matter went into the court, लेकिन ये पिक्चर इतना पॉपुलर हुआ कि साउथ इंडियन डायरेक्टर ने बोला कोई बात नहीं है, पिक्चर को विड्रॉ नहीं करना है सिनेमा घर से, लेकिन आपने जो प्रॉफिट कमाया उसमें से हमको कुछ शेयर आपको देना पड़ेगा. बादशाह आई ऑलरेडी स्पोक. टी सीरीज एक जमाने में था जो सॉन्ग्स कॉपी करके फ्री में पब्लिक को बांटता था. ये एंटायर टीम का जो भी एसेसरीज था फ्रीज किया गया, and they faced all the employees of this organization. Guruji.com started facing the term of imprisonment. Okay, I am taking this last example is of Jandu Balm. Jandu Balm. This wordings, the name of this product was used in a song of movie Dabang. Okay, और जब ये यूज किया गया, इमामी was a manufacturer of Jandu Balm was not happy. Not Imami, it was Jandu Pharmaceuticals. They were not happy. They said हमारे बिना परमिशन लिए आपने हमारा प्रोडक्ट का नाम यूज किया है, हमारे प्रोडक्ट को आपने बदनाम किया है, ब्रांड नेम खराब कर रहे हो, तो ये कॉपीराइट वायलेशन हो गया.
Meanwhile, this business was sold by Jandu Pharmaceutical to Imami Pharmaceuticals. And Imami said that why can't we, they had contacted Arbaz Khan Production. उनको बोला कि भाई आपने हमारा प्रोडक्ट का नाम लिया तो ये हमारा थोड़ा नाम खराब हुआ और आपने इतना सब कमाया तो आप हमको कॉम्पेंसेशन कीजिए. अरबाज खान वॉज वेरी स्मार्ट. ही सेड टू देम कि जब भी हमने जंडोबाम नाम नहीं यूज किया था तो आपका बिजनेस डायनेस्टी था 700 करोड़. जंडोबाम यूज करने के बाद लोगों को मालूम पड़ा कि खाली विक्स बाम मार्केट में नहीं आता है, जंडोबाम भी आता है. एंड देयरफॉर योर बिजनेस got extended and it went to 1000 crores. Okay, fine. So what happens here is that people were, हाँ, compensation दो. तो अरबाज खान ने क्लियरली उनको बोला, जंडूबाम इमामी फार्मास्यूटिकल्स को, कि एक काम कीजिए, आपने जो मुनाफा कमाया 300 करोड़ का, उसमें से हमको शेयर दीजिए. See, please try to understand this awareness will always be saving you from landing into the trouble. इसके लिए ये इतने सारे मैंने एग्जाम्पल्स आज आपके साथ क्यों शेयर किए हैं. दैट नेवर स्टील एनीवन्स आइडिया. Okay, never steal anyone's idea. Use your own creativity for making your own business. Okay. Now, this is one case which arose at the time of lockdown 2020 में हुआ था. अब देखो दोनों का, इसमें दो टाइप के डिस्प्यूट्स हो गए. एक ट्रेडमार्क का हो गया और एक कॉपीराइट का हो गया. आपने सिंबल कॉपी सेम किया, नाम कॉपी सेम किया, प्रोडक्ट भी सेम, पोटैटो वेफर्स बेच रहे हो. ओरिजिनल कंपनी था गोलमोल और डुप्लीकेट कंपनी है गोलमाल. तो जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको समझ में नहीं आता है कि क्या वो ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या डुप्लीकेट. ये मैटर अभी भी कोर्ट में चल रहा है. In fact, the purpose of Copyright Act is we should. This act came in the year 1957, though enacted before the Britishers. It confers on us economic rights and moral rights. Economic means it is enabling you to get financial benefits, and moral rights, it is enabling you to get recognition in the society. Now, we being the student, we are very good in copying someone's work and getting the credit. प्रोजेक्ट भी अगर हमको कोई सब्जेक्ट में मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक का प्रोजेक्ट कॉपी करके हम दूसरे को अपना प्रोडक्ट, अपना ये राइटअप बता के दिखाते हैं. सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. प्लीज कीप इन योर माइंड, प्रोजेक्ट्स है, रिसर्च आर्टिकल्स है, यू कैन नेवर कॉपी एनीवन्स वर्क. वन सेकेंड, 1 minute, ma'am. Yeah. So this is, when you're copying someone's work, this would be known as plagiarism. And when it is pertaining to the research work, it is going to make you lose your promotion and other benefits, monetary benefits. So as a student, avoid copying anyone's work. If you're copying someone's work, please give due respect. That is, show the citation, the source from where you have taken. See, if I want to avoid plagiarism, whenever I want to write something, I would read the original stuff. We will be reading that number of times and we will be converting in our own word. We will never do direct cut, copy, paste. From wherever, say if I have taken from newspaper or from some magazine or from journal, I am definitely going to share from where this product, write up is there or whatever it is, from where I have taken. Yeah, certain common phrases we can copy for that. Say for example, do or die was, given to us. This quote was given to us by Subhash Chandra Bose. I cannot change the wordings over there. And whenever we are writing anything, very important for us is to show references. Now, when I say references means from where I have referred number of products, I would be specifying the name of the book, journals, these numbers from where it has been taken. Yeah, please switch off the mic.
finally, there in many organizations we have the software tools for checking the percentage of plagiarism. Beyond 10% plagiarism, it is not being permitted. So this is the UGC side which is applicable to the students, to the faculties, which says very clearly that never copy anyone's write-up and give credit to yourself. Never do that. Fine. Now coming to the Indian Patent Act. So whenever you're doing some innovations, you're finding out some very innovative way of doing the things. You need to apply for a patent right, which what यथार्थ did. जो 5 साल का बच्चे का हमने जो देखा, that he was able to go for patent right for inventing a new type of bottle which has a tap. So let's go to the history that we became more aware about the Patent Act in 1970 and the rules in 1972. Okay, and these patent laws are applicable throughout India. But see, the first law, patent law, came in the year 1856. Then we had something in 1911. Then in 70, 72. Then in 2005. और एक लास्ट अमेंडमेंट 2020 में भी नया पेटेंट एक्ट आया है. So what is patent? We got the new patent amendment rules in 2020. Okay. So what is patent? Let's understand this. See, if I am inventing, मैंने कुछ एक नया संशोधन किया है और वो संशोधन मैं अपने पास ही रखूंगी तो उसको समाज को बेनिफिट नहीं मिलेगा. मुझे भी क्या मिलेगा? तो मुझे पैसा चाहिए, मुझे नाम चाहिए, and I want no one should copy my work. For that we have patent. See what is written in the box. Why is patent necessary? Okay, why is patent necessary? So because of this patent laws, what has happened is we are becoming more engrossed in doing research work. ठीक है, हम आजकल रिसर्च ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं रिसर्च में. Fine. We are also trying to see that our whatever inventions we are doing, we are able to promote more inventors, encourage development of technology, and to see that new types of industries are coming into establishment. So the need of patent is that whoever is doing something very creativity, they need to be protected, their invention need to be protected, and finally for their invention they should be rewarded. Okay, so let's go to the next slide. See, I have taken this picture from a site known as National Innovation Foundation. तो वो पेटेंट के लिए बता रहा है कि 5 चीजें होनी चाहिए. एक कुछ एकदम हटके से आपने कुछ प्रोसेस बनाया, मशीन बनाया, या एक यूनिक आइडिया है, या एक यूजफुल आइडिया, या ऐसा कुछ जो आज तक किसी ने सोचा नहीं. All these things can go for the patent right. A very good example of this person, इस्त्री वाले बंदे का गाड़ी है, रूफ के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए, ऐसी जगह जाके खड़ा रहता है जहां पे उसको सनलाइट बहुत अच्छा मिलता है. सोलर पैनल्स वो सोलर एनर्जी ग्रैब करते हैं और उसको वो पास ऑन होता है नीचे एक मशीन में जाके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज हेल्पिंग दिस पर्सन टू डू द आयनिंग ऑफ क्लोथ्स. ये बंदे का जगह का भाड़ा बच जाता है और गली गली जाके जब वो कपड़ा इस्त्री करके देता है उसको स्पॉन्टेनियसली कैश मिलता है. उसका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी कंट्रोल में आ गया. सो दिस इज अ वेरी यूनिक आइडिया. द 4 पिक्चर्स अगेन आर बीइंग टेकन फ्रॉम National Innovation Foundation. One of this idea got sold somewhat in the month of April 2020. The first one, the shoe is having a socket. Okay, the shoe is having a socket. So what was that? These students invented this idea कि जब हम चलते तो हमारी बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है, ये आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. शू में नीचे एक सोल है जो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर चार्जिंग योर सेल फोन्स एंड अदर एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. फाइन. If you see the second picture, you'll find the farmer is trying to cut the crops and he is getting injured with the tool. So what is very necessary is that instead of running here and there, the tool itself should have the first aid material. So you can see the handle has bandage, cotton pod, Dettol, antiseptic ointment, and so on. The third picture on the left hand side is a machine which is showing how automatically
you can prepare wafers, potato wafers, and so on. You don't require more number of laborers. And the last is showing a type of a watch which, if allowed to be worn by a senior citizen and they do have a habit of walking in sleep, it would start buzzing and it would make all the family members alert that so and so person now has started walking in the sleep, and accordingly the members become, they will become so alert that they can, bring back this person to the home. So ample number of such innovative ideas students are, putting forward into National Innovation Foundation. Not necessarily you need to be from the science stream. Even we being a commerce students, our students would be having ample number of such innovative ideas, which if you are, approaching to the government, and if it is found to be unique, which no one has placed forward, you are entitled to get the patent rights. So do visit this site, that is ipindia.gov.in. ये साइट को जब आप क्लिक करोगे तो आपको वहां पे 5 आइकन्स दिखेंगे. One is talking about patent rights, one is for trademark, one is for designs, one is for geographical indicators, and the fifth one is Rajiv Gandhi Intellectual Property Institute of Intellectual Property Rights Management. So do visit this site periodically, and especially the fifth icon will give you ideas about the various such certificate programs that are being run by Rajiv Gandhi Institute of Intellectual Property Management. The certificates have due weightage, which in when you go for a job will enable you in getting a very good job. So whenever you are inventing something new and you're completing the process of registration and it is found it to be a very unique product, you, after paying a prescribed fees, you are being given this certificate which is valid for a period of 20 years. So see one another case, copied packaging. This was of Samsung and Apple, wherein Samsung actually sued Apple, saying that Apple copies their, wireless technology, communication skills, and many more things. And finally, it was found that it was not Apple who was trying to copy the technology, software. Excuse me. 10 minutes here. Okay, so in that case, finally Apple was able to win this dispute, and around two judgments that were being passed. One was the Samsung mobile phones were not be allowed to sold in US market, and the second one was that Apple was supposed to get a compensation of $1.049 billion from Samsung. So you would have come across with similar such patent right violation case of Oppo and Nokia, wherein Oppo was able to sell more number of mobile phones, and finally it was found that the entire design, the technology was being copied, wherein per mobile phone around €3 Oppo has to pay to Nokia company for the number of mobiles sold till a particular date in the year 2018. Similarly, Tata has around 75 patent rights. They made 37 inventions, but more than 70 patent rights they are having for their nano cars. Coming to the very last part, if you see, these are all the symbols, I can say, for the products that we are, rarely trying or occasionally we try to buy. And these all symbols are representing soft drinks. If you see, each symbol has different color, the way of writing alphabets is also differ, and many more things. So because of these symbols, what happens is it is very easy for us to identify the product and not to get cheated from some duplicate products that are being sold in the market. So the Trademark Act came in the year 1999, and finally there was one more Trademark Act, the recent Trademark Act. They are trying to make us aware that how we can get better protection of our symbols for goods and services, and to see that there is no fraudulent use of the mark being done by other competitive firms. So we had the last trademark rules in the year 2017. So you can see, around somewhere around the products or the services symbols like TM, SM, R encircled. So TM says that it is an unregistered trademark, is in the process of getting registered, and therefore the symbol or the promotional message, design of the product, or the way the alphabets are written, or the color scheme that is being used, that cannot be copied. Similarly, we have SM for the service mark.
And when the trademark gets registered, we are using the symbol R encircled. So if you see what exactly is trademark, it is a name, it could be a word, it could be a phrase, it could be a logo, symbol, design, it could be image, it could be sound, it could be combination of number of such elements which you can say would be having visible signs. It could also be having non-visible signs. Okay. Sometimes even by the music that advertisement are being run on various channels, only by hearing a music we are able to identify the product. Or even when you are having some food stuff, ओनली बाय द फ्रेग्रेंस. अभी मेरे सामने यहाँ पे प्लेट बन रही है, वहां पे मैं नहीं भी देखूं तो मुझे समोसे की फ्रेग्रेंस आ रही है. ओके, getting? So all these are amounting to trademark. So you can see different types of trademarks I'm showing. One is bottle of Coca-Cola. If you have seen it, it has a very unique structure and the way of writing name alphabets are differing. M stands for McDonald and it has a promotional message of I'm loving it. If you see, Orange was a SIM card which later on went into Hutchison. Now it is Vodafone and Vodafone Idea, and so on. So, anyways, when you go in a market to buy any product, I think अगर आप product का नाम भूल भी जाते हो, you are able to see a range of products and you are able to identify on the basis of the package or the fragrance or a typical structure a product has. So this is the main reason that we need to have a unique symbol, promotional message for our product, so that our customers, they remain loyal to us, they are not being cheated. And in case if any company, a rival firm is trying to take our undue advantage, they want to take our customers away from us, we are able to show them our loyalty and to see that they never get shifted to what we call it as a supplement product. So do visit this site ipindia.gov.in. So they frequently जब आप विजिट करोगे तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन ये साइट से मिलता है. सपोज आपने एक प्रोडक्ट के लिए सिंबल बनाया है तो उसका आपको राइट्स मिलेगा नहीं मिलेगा. Visit this site. There are number of FAQs which will be answering your question. Don't hesitate, and please keep in mind we have number of different types of trademarks. We have a service mark when we are trying to provide unique types of services like a CA, chartered accountant, before the name writes CA, CS, and so on. We have a collective mark, we have a certification mark, we have image mark, we have sound mark. Maybe we may forget the name of the product, but when we see certain types of monuments, Charminar rice, Taj Mahal tea, okay, then we have certification mark which is guaranteeing, assuring us that you are going to get the purest of the products, BIS 916 and so on. See how this is infringement happening. If you see the symbols, many times we are not aware that are we paying the amount for the original product or not. And if you are able to read and write, yes, you will be able to understand what is the difference between the symbols that are being shown over in this particular slide. There was a dispute between Oreo biscuits and Fabio, wherein Fabio is a Parle product. And finally, they had copied the entire packaging, color scheme, the way the biscuits are, being packed, material, almost everything has been copied. This matter is in the court of law, and finally, Parle now wants to withdraw this product from the market. They don't want to supply this product because it is clearly copied from the way how Oreo biscuits are being supplied into the market. Coming towards the very last example, Amul, the taste of India. Many think we can use the word, the name Amul for multiple different types of products, and these questions were being raised, the disputes have been raised. Two such shops in Gujarat and one in Kolkata, they were asked to remove the name Amul because Amul totally belongs to this particular society, that is Kaira District Cooperative Milk Producers Union. So Amul word cannot be used. Yes, you can use it for an individual, but not for any products or services. So all these three were spontaneously given, some time duration to remove the name from their signboards. Another and the second last case study was of natural ice creams, wherein if you see in original natural ice cream, A is written perfectly in a right manner,
whereas in a duplicate you can find A has been reverse shown as an ice cream cone. So when this matter came surface and it went into the matter in the courtroom, it was found that the company who has copied the symbol and presented the symbol in a different way is supposed to pay a compensation of 150 crores for the damages that they had caused to the original company. So the compensation never goes for a very small amount, it is always for a very huge amount. And the latest thing which you would have observed in the market, आप ये दूध से जब आप ये मिल्क बैग देखते तो आपको लगेगा अमूल मिल्क है, and when you're coming very close you will find it is not Amul, it is annual. So therefore you need to be conscious that you are never getting cheated. So that's it, I think. With this particular, so many examples I had tried to make the concept of intellectual property rights very clear to our new learners. And the last thing which I would like to say, that many of us could even think of making their career in the field of intellectual property rights, wherein per day you can start earning from 15,000 to lakhs of rupees. आए दिन पे हर कंपनी को आज की तारीख में ऐसे लोग चाहिए, एडवोकेट्स चाहिए जो उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दे, और कहीं पे लगता है कि किसी ने कुछ गलत किया है, then they should be able to help you in recovering a very huge amount of compensation from them. Look into, do visit the site www.ip.india.gov. Do visit this site, don't miss. And please, there are 5 icons. हर alternate day वो site को आप visit करेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक knowledge मिलेगा that how you can make your career in the field of intellectual property rights. Thank you, ma'am. The session belongs to you now. Pooja, ma'am, thank you. Thank you so much, ma'am. Now I request Neelam Sen, ma'am, Assistant Professor of SFC Commerce, to conduct question and answer session and vote of thanks. Neelam, ma'am, over to you. Thank you so much, Akshay sir. Students, if you people have any doubt related to the topic, you guys can ask your question in the chat box. You guys can post your question in the chat box. Anybody? I think the concept is very clear to them. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Akshay sir. Good afternoon to one and all. Let us remember what we have learned today.